उन्होंने ही पहला तो जो लास्ट मैच विकेट था, जो कि लास्ट कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद गौतम ने बोला कि उन्होंने ब्लेम सब अपने ऊपर लिया। ऑनेस्टली जो अभी मैं आया हूँ तो आई विल टॉक ऑल द ऑनेस्ट थिंग व्हाट आई नो एंड व्हाट आई फील, कि उन्होंने वो बोल दिया कि हाँ हमने मांगा था, बिकॉज ही फेल्ट कि क्यूरेटर्स पे या उन किसी पे ब्लेम नहीं आना चाहिए। डेफिनेटली जब इंडिया में टेस्ट मैच होता है, हम जब बाहर जाते हैं, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कंट्री अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगी। इंडिया में हम स्पिन पे खेलते हैं। जब से मैं आया हूँ, मैं तभी से आपको बता सकता हूँ, जब से मैं आया हूँ हर टाइम एक ही बात होती है, 4 दिन 4.5 दिन टेस्ट मैच चले, हमको इतना चाहिए थोड़ा स्पिन हो, क्योंकि स्पिन हमारी स्ट्रेंथ है। पहले दिन पे, दूसरे दिन पे फास्ट बॉलर्स गेम में रहते ही है, चाहे आप अहमदाबाद टेस्ट देख लो, दिल्ली टेस्ट थोड़ा स्लो था बट अदरवाइज फास्ट बॉलर्स ने ऑलवेज विकेट लिए। नाउ लास्ट मैच में एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़ा एक दिन के बाद ऐसा लगने लगा कि थोड़ा क्रम्बल हो रहा था, थोड़ा मिट्टी आ रहा था। आप सब ओबियसली देख ही रहे, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर स्पिन भी एक्सपेक्टेड था इतना ज़्यादा तो वो 3 दिन के बाद था या तीसरे दिन शाम को था। अभी समटाइम्स वेदर, समटाइम्स क्यूरेटर भी नहीं चाहते थे, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो। अभी वो सेकंड डे से ही वो होने लगा, विकेट ज़्यादा ड्राई हो गया, या तो विकेट का जो टॉप प्लेयर था, मैं जो रीड करता हूँ, वो ज़्यादा ड्राई हो गया, और जो अंडरनीथ वाला लेयर था वो बहुत हार्ड था, क्योंकि काफ़ी रोलिंग हुआ था। उसकी वजह से प्रोबेबली ये हुआ, जो बेस्ट मैं समझ रहा हूँ। बाकी जेन्युइनली कभी भी ऐसा आज तक आप क्यूरेटर से किसी से पूछ सकते हो, किसी ने नहीं बोला है कि 2 दिन में मैच खत्म हो या स्क्वायर टर्न हो। एक दूसरी बात जो आप टेक्निक की बोल रहे हो, टर्निंग ट्रैक पे डिफेंस अच्छा होना ही चाहिए। डिफेंस प्रोबेबली फॉर मी इज नॉट द राइट वर्ड, आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए। अगर आप लेंथ अच्छी पिक कर रहे हो, आगे पीछे स्टेप आउट गेम, वो सब अच्छा रहेगा, तो आप टर्निंग ट्रैक पे कोई भी विकेट पे अच्छी बैटिंग करोगे। एक चीज़ है कि, और काफ़ी जो आप बोल रहे हो कि स्टाफ की तरफ से या क्या आपको लगा, एक चीज़ मेरे को ये भी लगा कि एक ही चीज़ पे गौतम गंभीर गौतम गंभीर गौतम गंभीर ही बोल रहे हैं। कोई ये तो बोल नहीं रहा कि ये बैट्समैन ऐसा किया, ये बॉलर ऐसा किया, या तो बैटिंग कोच बैटिंग हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि कभी आप ओवर डिफेंसिव भी हो जाओ ना टर्निंग ट्रैक पे, तो भी फंस सकते हो, क्योंकि बॉलर कंसिस्टेंटली डालने लगेगा। तो हम वो सब बात करते ही है, हम वो बात करते ही है कि कोई एक प्लेयर रिस्क लेके मार ले, या तो आप बिजी क्रिकेट खेलने की ट्राई करो, या तो आप गेम को वनडे मोड में ले जाओ, जहाँ पे वो लोग अटैक भी ना कर पाए और कॉन्स्टेंटली एक जगह में डाल ना पाए। वो सब बात करते ही है। अभी इंडिया में या तो लास्ट 30-35 मैच में, इंडिया में तो हम ये 25-30 मैच में दूसरा मैच आ रहे हैं, तो जो 23, 25, 27 मैच जो जीते हैं उसका क्रेडिट तो कोई दे नहीं रहा है। जो 2 मैच हारे हैं उसमें गौतम गंभीर किए जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम अ स्टाफ एंड आई फील बैड दैट्स नॉट द वे। मे बी सम पीपल इंडिविजुअल हैव एजेंडाज, गुड लक टू देम, बट इट इज़ वेरी बैड। बट दूसरी चीज़ जो है कि डिफेंस के साथ फुटवर्क के साथ अप्रोच, और अप्रोच में भी ऐसा है, वो भी मैं आपको बता दूं कि कोचिंग लेवल पे हम ये सब डिस्कशन मैच के पहले कर सकते हैं। जब बैट्समैन बैटिंग में जा रहा है, उसको अगर हम बोले कि भाई तू एग्रेसिव खेल ले, भाई तू जल्दी रन लेने लग, दैट वोंट बी राइट। सो वी बात करते ही है प्लेयर्स से कि यू मेक अ प्लान, टेक योर लिटिल टाइम। ऐसा भी नहीं है कि पहले बॉल से जाके घुमाओगे तो आप लगेगा, वो भी दिखता है। जब कोई आदमी एकदम एग्रेसिव खेलता है तो वो भी दिखता है, बट यू टेक योर ओन टाइम। हर एक प्लेयर का एक सर्टन टाइम होता है, यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल एंड यू स्टार्ट, आई फील ऐसे विकेट पे यू प्ले रादर प्ले अ बिजी क्रिकेट देन अ डिफेंसिव क्रिकेट विद अ करेक्ट फुटवर्क। जब मैं भी खेलता था, और मेरे लास्ट 5 साल में जो मैंने सुना, जो पूरा इंडिया वाइज चल रहा था कि भाई हम ग्रीन विकेट पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएंगे, हमको 3 साल ऐसे ट्राई करेंगे कि पहले 1-2 दिन फास्ट बॉलर गेम में हो, थर्ड डे पे बॉल घूमे तो स्पिनर भी गेम में हो, जिसके चक्कर में ओबियसली फास्ट बॉलर का रोल बढ़ाने के आप ग्रास रखोगे, मे बी 3rd-4th डे इतना बॉल नहीं घूमेगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ एक है कि जो पुराना, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो टेस्ट क्रिकेट था, उतना टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा था, वनडे था, T20s इतने नहीं थे। अभी हमारे
हमारे पास और वर्ल्ड में काफ़ी ऐसे प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट अच्छा एडप्ट करते हैं, बट तीनों फॉर्मेट खेलने की टेक्निक अलग है. आप टेस्ट मैच में बहुत ही ज़्यादा फुटवर्क पे रिलाई करते हो, आप T20 में और पावर हिटिंग में बहुत ही ज़्यादा अर्ली बेस क्रिएट करने पे ध्यान देते हो. तो अर्ली बेस क्रिएट करने में फुटवर्क नहीं होगा, उसमें सिर्फ पावर से हाथ ही चलेगा. और टेस्ट मैच में फुटवर्क ही ज़्यादा चलेगा. दैट डज नॉट मीन कि बैट्समैन कैन नॉट डू दैट, दे कैन डू दैट. बाकी अदरवाइज जैसे T20 क्रिकेट गेम फास्ट होती गई, एक टाइम था कि 5 दिन के मैच भी कितने मैचेस ड्रॉ होते थे. आज आप देखोगे तो 50 मैच में हार्डली 1-2 ड्रॉ मिलेंगे. दैट इज बिकॉज ओवरऑल द क्रिकेट इज मूविंग फास्ट. सो प्लेयर्स आर प्लेइंग मोर स्ट्रोक्स, दे आर मोर, सो दैट कुड 2 or 3 4 डिफरेंट रीजंस. इट इज़ नॉट जस्ट वन रीज़न कि पहले लोग अच्छा डिफेंस करते थे या पहले. इट्स जस्ट ओवरऑल प्लेयर्स का माइंडसेट चेंज है. सो वो तो टाइम के बाद मे बी 20 साल के बाद T10 चल रहा होगा तो माइंडसेट और डिफरेंट होगा, क्योंकि वो टाइम के साथ चीज़ें तो चेंज होगी ना. देर आर टॉक्स वेयर वी सी दैट Australia or England probably have 6-7 test centers, right? India is a huge country and we have lot more test centers. Now, having 5 or 6, 7 test centers, the benefit is that you would exactly know the behavior of wicket. You will know what kind of a soil is there, what to expect. But for India, so many centers we have, so many big grounds we have, and obviously, like you said, that people would like to come and watch cricket everywhere in India, not only 5 or 6 centers. So that is something I cannot comment on because that's. But the reason they talk 5, 6, 7 centers is because you can control the preparations. You know how the wicket will develop, how it will build up, which England and Australia, or for that matter even South Africa, have that. But being such a big country, if we have to play on more test centers, that's absolutely fine. I believe the another thing is with weather or timing or see, I am a firm believer that these boys are thoroughly professionals. Professionals don't go wrong very often. If you go wrong very often, you cannot be called professionals. So they will adjust to any conditions. They, whether it is morning, whether it is evening, whether it is light, whether it is different wickets, different soil. Their job is, and our job is to adapt to that and play the best cricket we can. And now, if you play 100 matches, we are going to lose 8-10 matches somewhere. We can't win 100 out of 100. If one team wins 100 matches out of 100, then people won't like it only because then there will be no fun. So the challenge has to be there, and I think players should adapt to that. We should adapt to that. The red soil wicket, generally, if you ask me, will have probably little more bounce, and how much moisture is there, that is important. So that again goes on weather, because in Calcutta also it was surprising when actually the mitti was coming out. That was surprising. No team would ask that second day we want it to blast. That is, anybody would understand that. It's not a rocket science. So this wicket probably will play better, I think. It will play better. Now, how much seam movement, how much grass, live grass is there at the end of tomorrow evening before they cover the wicket, and what kind of a weather we'll have from morning till the evening, which I also personally don't know. So it will be very difficult to comment on that, but it should be good wicket. It should be 4 or 5 days of good cricket. And whatever wicket turns out to be, even the Calcutta, I am definitely saying that it is our fault we lost. There is no doubt. Whatever wicket, if two teams are playing on it, you are supposed to win. So you can't say wicket was like that, so we lost. We lost because they played better cricket than us, or we didn't play the cricket to our best potential. But here also, whatever wicket it can be, it doesn't matter. We have to make sure we play good cricket and we try and win the game, which is something I wouldn't really want to go very deep into it. But when you think that against South Africa, 2 left-arm spinner may be useful, if you think in that line, and then you also want a wrist spinner. Washington, the way he was scoring in England, amount of runs he has scored every game, which you all know. In that process, if you go on with the second left-arm spinner, then you obviously going with a one less batsman. But obviously the amount of run Washington has scored is as good as any batsman. So that in that kind of any calculation, if team management or captain and coach thought in that line, I don't think
that is a big issue. I think we didn't play good enough cricket to win that game. So the clarity is that if you think of two left-arm spinner, and if you play them, then there will be someone will miss out in 11. No, we can't play 12. Spin is definitely our strength. That does not mean that we don't have fast bowlers. But with the countries, the weather, the way of preparation. So in England, if you leave X amount of moisture, that will last for 4 days. In India, if you leave that kind of a moisture, in 1 day it will get dry. So how would you, like, if in England, if you leave 7 mm grass, even the last day, ball was seaming, swinging, everything. Here, if we leave that kind of a grass and same amount of moisture, the second day, ball won't seam. Ball won't swing. What will you do? So with weather and the conditions we have in India, obviously, Jasprit and all, even last game, our fast bowlers took wickets. No, they took more wickets, like 8, 10, 12 wickets they took. So it's not that we don't have fast bowlers, but looking at conditions, nobody wants draw. There are not many draws. But Indian wickets, if I believe that if you leave lot of grass and make it very hard, it probably the result could be also difficult. Because if it becomes a very flat batting track, and if one team bats for 2 days, what, like he was asking in our time, when we wanted a draw to qualify, we used to leave a lot of grass and roll it a lot, and then just bat for 2 days, so there will be no result. So when you are playing a test match and when we are thinking about WTC final and the points, you actually don't even want to give a wicket which can give too many draws also. Because whatever we talk about technique, if we decide to bat on a good track for 2 days, 2.5 days, our batters will bat, I give you guarantee. If there is not much sideways movement or not much swing, and if with lot of grass, if ball is not gripping or spinning, people will bat 2.5 days, no issues. So you have to keep that balance also, no? He's definitely recovering really well because I also met him yesterday. So he's recovering well. Now, the decision will be taken tomorrow evening because the physios, doctors, they will have to take a call that if he's fully recovered also, while game, he should not get that spasm again because it is very important. So that one point also, like last game, nobody has discussed much. If Subman could have batted both the innings, the 30 run may not would have even mattered. So if first inning he batted and had one partnership, we had 100 runs lead, we would have been fine. That is not an excuse, but that is a reality that 2 innings he could not bat. So obviously the doctors and physios and team management's concern is that it shouldn't happen that, so if he is fully recovered and we have a guarantee that very likely he won't have this issue again, then he will play. If there is a doubt, then I'm sure he will take a rest one more game because it won't be helpful to the team. Now, player like Subman and a captain, any team would miss. But if he's missing out because of an injury, then obviously we have batters and we have players and we have plenty good players. They all should come, like I said, they are professional, they should come and perform for the team. That's players' job and our job is to prepare them. So we all wish that he plays, but if he doesn't play, we'll definitely have a good replacement and maybe the guy coming in will score 100. So we believe that. The step out game has reduced and I agree.